Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we were doing unit number I think 5th. Okay, and today we are going to start with it is unit number 6. So we were doing unit number 6, and today we are going to start with one more topic of the same unit, that is classic characters, given at page number 67. So class, kindly open your books at page number 67, that is classic characters. So I'll just write on the topic on the board, that is classic, CLASSIC, classic characters. Okay, given at page number. The page number is 67. Okay, all of you please open your books at page number 67, that is classic characters. Okay, so what is given in this topic? So in this topic class, you can see the pictures of various personalities are given. So most of them are from the Bollywood and the Hollywood. So Hollywood और Bollywood industry से related कुछ persons हैं, कुछ personalities हैं, famous personalities जिनके pictures दी हुई हैं, and in the mid you can see the various classic characters. Classic characters means from which they gain so much fame. जिस character को play करने के लिए उनको बहुत fame मिला, उनको बहुत लोगों के बीच में सराहना मिली. They just got so much of praise from the people for those characters which were performed by them. So there are the certain characters that are being performed by all these Hollywood and the Bollywood actors, and they have gained so much fame from it. So now we are going to talk about them and the characters that has been played by them. कुछ characters जो उन्होंने play किए हैं जिसके लिए उनको बहुत ही लोगों में praise मिली. Starting with the first one. Okay, the first you can see that is a picture of Tom Cruise. तो first जो picture दी है वो किसकी है? That is of Tom Cruise. Tom Cruise आपने सुना है, one is one of the best actors of the Hollywood. Okay, and ये बहुत ही एक one of the senior, not senior actually, he is one of the best actors from the Hollywood, and one of his best movies, Mission Impossible. Okay, so in that movie he has gained so much fame for performing. उस movie में जो उन्होंने character निभाया था, that is of Ethan Hunt. So Tom Cruise has performed a character or played a role of a person whose name was Ethan Hunt, and that was in the movie Mission Impossible. Okay, so it is one of these classic characters that was played by him. Okay, so Tom Cruise is known for his classic character Ethan Hunt for the movie Mission Impossible. So this is the answer of the first. The first का answer क्या है? Okay, the first picture is of Tom Cruise. Okay, Tom Cruise, C-R-U-I-S, that is Tom Cruise. The first picture is of Tom Cruise, and the classic character performed by him is given at option number B, that is Ethan, E-T-H-A-N, Ethan Hunt, H-U-N-T, Ethan Hunt. Okay, starting with the second one now. So second picture is of one of our Bollywood actors, that is Alia Bhatt. Okay,
So Alia Bhatt is one of the youngest Bollywood actors of this time. तो ये हमारे जो बॉलीवुड के एक्टर्स है उसमें से सबसे यंगेस्ट एक्टर हैं. एंड शी हैज प्लेड various characters in the various movies, but she gained so much fame and so much appreciation, so much praise for his work in the movie Highway, in which she has performed a role of वीरा त्रिपाठी. तो वीरा त्रिपाठी नाम का एक कैरेक्टर था जो कि उन्होंने हाईवे एक मूवी है अलॉन्ग विद रणदीप हुडा इन्होंने किया था. उसमें उन्होंने वीरा त्रिपाठी का रोल निभाया था, जिसके लिए उनको बहुत ही लोगों से प्रेज मिली. शी हैज गॉट सो मच ऑफ एप्रिसिएशन. सो द सेकेंड इज ऑफ पिक्चर इज ऑफ आलिया भट्ट. ओके, दैट इज ऑफ आलिया भट्ट. एंड शी हैज गॉट फेम, और यू कैन शी हैज गॉट लोगों के बीच में उनकी पहचान बनी. उनके जो कैरेक्टर दैट इज ऑफ वीरा त्रिपाठी फ्रॉम द मूवी हाईवे. वीरा त्रिपाठी. तो वीरा त्रिपाठी नाम का एक कैरेक्टर उन्होंने इस मूवी में निभाया था. ओके, सो इन दैट मूवी शी वॉज अ चाइल्ड फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली. ये एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है इन दैट मूवी. Okay, and suddenly she got kidnapped by a truck driver whose role is played by रणदीप हुडा. तो वो एक ट्रक ड्राइवर है रणदीप हुडा, वो उसको किडनैप कर लेते हैं. एंड while she was residing with that truck driver that is रणदीप हुडा, so वो उस टाइम पे बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस करती कि दैट एक्चुअल में उसकी लाइफ क्या है, बट तो वो लाइफ में क्या देख रही है, बट व्हाट एक्चुअल लाइफ इज दैट शी हैज सॉन ड्यूरिंग द होल जर्नी विद दैट ट्रक ड्राइवर. तो जब उस ट्रक ड्राइवर की तरफ शायद होती है तो वो देखती है कि अलग अलग तरह के जो लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं, लाइक रिच एंड पुअर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर? इवन द पुअर्स आर मोर हैप्पी देन द रिच वन. जो रिच लोग होते हैं वो दे ऑलवेज फील स्ट्रेसफुल बिकॉज ऑफ द वर्क लोड, बट द पुअर पीपल दे जस्ट एंजॉय देयर लाइफ्स. सो वो सोचती थी कि उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी है एंड शी इज जस्ट ब्लेस्ड. बट लेटर ऑन शी रियलाइजेस दैट शी लिव्स इन एन एनवायरमेंट वेयर एवरीथिंग वाज फेक. बट व्हाट एक्चुअल लाइफ इज दैट शी हैज सीन थ्रू हर हिज जर्नी विद दैट ट्रक ड्राइवर. ओके, सो फॉर दैट मूवी she has got awards, various awards as well. And in that movie she has played the role of Veera Tripathi, okay, in the movie Highway. Now moving to the third one. Okay, so third picture is of Heath Ledger. So third picture किसकी है? वो किसकी है? Heath Ledger. I hope आपको Heath Ledger पता हो. Okay, the Dark Knight movie अगर आपने देखी हो, The Dark Knight. Okay, The Dark Knight means जो movie Batman की जो movie है. Okay, there are the several parts of the Batman movies. The Dark Knight जो पार्ट है उसमें जो आपने कैरेक्टर देखा होगा जोकर. द जोकर आपने देखा, हर मूवी में एक जोकर कैरेक्टर होता है एंड ऑल द कैरेक्टर्स आर प्लेड बाय द डिफरेंट पर्सन. जो जोकर कैरेक्टर है वो बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर जो लोगों ने प्ले किया है अलग अलग मूवीज में. सो लीथ हेजर को भी उनका एक द डार्क नाइट मूवी के लिए उनको एक ही जस्ट गॉट उनको अपनी जो मूवी द डार्क नाइट थी उसके लिए उन्हें ये एक एप्रिसिएशन मिली. he just got the he became a known face to the people because of the movie The Dark Knight. ठीक है, लोगों में उनको पहचान मिली. And for his acting in the movie The Dark Knight he has gone various several awards. Okay, and the name of the character that he has played in that movie The Dark Knight was the Joker. Okay, so the name of the actor is Heath Ledger, Leath, Heath Ledger, Hed. Okay, Heath Ledger, and the character played by Heath Ledger was E. The character played by the Heath Ledger was the E.
the Joker. The Joker. This is the character that was being played by the Heath Ledger in the movie The Dark Knight. Okay, so for this movie he has won several awards. Okay, he has won popularity from this movie only, and in this he has played the role of the Joker, and the name of the movie is The Dark Knight. Okay, and because I myself has seen the movie, so I'll just give you a very small message from the movie, that whatever the dialogues were delivered by this character, the Joker, that is जो हम अपनी एक्चुअल लाइफ में जो हम अपनी लाइफ में अवॉइड करते हैं, बट ही जस्ट सेज ऑल दोज थिंग्स कि दैट दिस इज ट्रू. जो हम मतलब उनके कई डायलॉग्स आप सुनेंगे जो आप कहोगे कि हाँ लाइफ मतलब वो एक्चुअल रियलिटी है, बट हम उसको मानते नहीं है. सो ही जस्ट प्लेड अ वेरी गुड कैरेक्टर, एंड द नेम ऑफ द मूवी इज द डार्क नाइट, एंड द रोल वॉज परफॉर्म्ड बाय लीथ हेडजर, एंड द नेम ऑफ द रोल इज द जोकर. जो डार्क नाइट है, जो बैटमैन के जितने भी पार्ट्स आए उसमें जो जोकर जो विलन है, द जोकर इज द विलन ऑफ द मूवी. ओके, सो द जोकर इज द विलन ऑफ द मूवी इन एवरी पार्ट, एंड ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द जोकर इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बैटमैन मूवी आर परफॉर्म्ड बाय द डिफरेंट पर्सन्स. जितने भी बैटमैन के जितने भी मूवीज में द जोकर कैरेक्टर है वो अलग अलग जो हमारे अलग अलग जो एक्टर्स ने परफॉर्म किए हैं. ओके, now moving to the next one, that is the fourth one. Okay, so you are well known to him. He is one of our Bollywood actor. He is Sanjay Dutt. He is none other than Sanjay Dutt. Okay, SANJAY, Sanjay Dutt. Okay, so the name of the character that was being played, for which he was being appreciated by the people, and the name of the character is Munna, from the movie Munna Bhai MBBS and Lage Raho Munna Bhai. These were the two movies that was given by Sanjay Dutt, and he just played a classic character of Munna. Okay, he was just a tapori from Mumbai. Okay, and he just tried to become a good human. तो वो उसमें कैसे एक द फर्स्ट पार्ट ही जस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. ओके, तो वो अलग अलग लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स इन द फर्स्ट पार्ट दैट इज मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए बोलता है. सो इन स्पाइट ऑफ क्विटिंग, इन स्पाइट ऑफ डाइंग, इन स्पाइट ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज नॉट रिलायबल, ओके, ही जस्ट टेल द पीपल, ही जस्ट टीचेस द पीपल एक्चुअली दैट इन स्पाइट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स यू जस्ट फेस इट. तो प्रॉब्लम से भागने से बेटर है दैट यू मस्ट फेस इट. ओके, और प्रॉब्लम जब आप उस प्रॉब्लम से भागोगे सो यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट. जब तक उससे भागते रहोगे प्रॉब्लम विल फॉलो यू. ओके, वंस यू सॉल्व इट बाय फेसिंग इट, दैट इट विल नॉट कम अगेन. ओके, अदर देन इफ सपोज इफ यू गॉट फेल समहाउ, अगर आप फेल हो जाते हो तो स्टिल इट जस्ट टीचेस यू लेसन. वो आपको एक लेसन देगी कि while doing this, ये चीज करते वक्त आपको ये प्रॉब्लम हुई and you were not able to solve it. So this movie that from the Sanjay Dutt, that is Munna Bhai MBBS, and the Lage Raho Munna Bhai, the classic characters played by him was Munna. That is given at option number F. That is Munna, MUNNE. Okay, so Munna, this is the name of the character, one of the classic character that was being played by Munna Bhai MBBS. Okay, next is the fifth picture is of one of ये भी हमारे एक बॉलीवुड के एक्टर्स हैं. What is his name? His name is Aamir Khan. He is none other than Aamir Khan. So he has gained, उनको बहुत सारी मूवीज इन, ही हैज लॉट्स ऑफ मूवीज, उन्होंने बहुत सारी मूवीज बनाई है एंड मोस्ट ऑफ देम आर द इंस्पिरेशनल वंस. लाइक रिसेंटली हमने बहुत सारी मूवीज इनकी देखी हैं जो कि इंस्पिरेशन थे, जस्ट लाइक दंगल, नॉट फॉर दंगल, यस दंगल इज इट. ओके, सो ऐसी बहुत सारी मूवीज. सो वन ऑफ हिज बेस्ट मूवीज इज 3 Idiots. उन्होंने 3 Idiots एक मूवी बनाई थी अलॉन्ग विद 2 other actors, माधवन एंड Sharman Joshi. Okay, so in which he has played a role of a college boy
who wants to study, but due to his family background, he was not able to go to even to the school. So he is just he's a person with a brilliant mind. Okay, so he wants to follow his dreams. वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहता है. उसका मतलब वो ब्रिलियंट माइंड पर्सन है, मतलब ही इज एन एक्सलेंट माइंड एंड ही वांट्स टू फॉलो हिज ड्रीम. वो अपने सपनों को फॉलो करना चाहता है, बट ड्यू टू हिज द पॉवर्टी, ड्यू टू जो गरीबी के कारण और ड्यू टू सम अदर फैमिली रीजंस, he was not able to study. But later on, due to circumstances, somehow he manages to study. So किसी तरह वो पढ़ना लिखना वो सीखता है. Okay, and later on he got an admission in an IIT college. तो later on उनको IIT में admission मिलता है because it was his passion, it was his dream to get admission. Okay, to study in that IIT. तो इसी वजह से उनको एडमिशन मिलता है उसमें, and then he follows his dream. Okay, मतलब इसमें this story is about that you should follow your dreams. Okay, जो आपके सपने हैं उसको फॉलो करना चाहिए. मैं ये नहीं कह रही कि मम्मी पापा की बात मत सुनिए. तो ये मम्मी से मम्मी मैम ने बोला है, देखिए I know every person has their own ability. Okay, every child has their own ability. So you may not be good in studies. So you may be good in the some other activities. You may be good in the games. कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं जो गेम्स में अच्छे होते हैं. Some are good in art. Okay, so every person has their own level of capability, and they are just brilliant in their own style in somehow. किसी तरह वो अपने किसी भी काम में एक brilliant होते हैं. Okay, so every person has their own ability. So this was being shown in this movie that you should not be forced by someone कि आपको यही करना है. No, if you are not interested in doing that particular job or that particular work, that you are not going to give even your 1% to that work. आप मतलब बेमन से वो काम करेंगे and generally that will not come out. मतलब वो कहते हैं कि अंदर से खुशी नहीं मिलेगी and you will not give your 100%. But if you love something like you love to do drawing or you want to be a teacher, so you will give your 100%, you will give your best. आप अपना बेस्ट देंगे to perform that work. Okay, because you love to. So it is being said that love your job before you do it. तो अपनी जॉब को पसंद कर. जॉब डजंट मीन कि जो हम पढ़ा रहे हैं दिस इज माई जॉब. लाइक जॉब मीन्स जो भी काम आपको दिया जा रहा है उसको जब तक आप उसको पसंद नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट. Okay, so the name of the character that was being played by Amir Khan was Rancho in the movie Three Idiots. Okay, so that is the fifth one. That is Amir Khan, and he has played a classic character of Rancho in the movie that is the Three Idiots. The movie name is Three Idiots. Okay, now moving next to the sixth one. The next picture is of one of my favorite Hollywood actor, that is Johnny Depp. Okay, so one example for his work is all the parts of the Pirate of the Caribbean Sea. The Pirates of the Caribbean Sea के जितने भी parts हैं उसमें जो मेन कैरेक्टर है that is Jack Sparrow was played by Johnny Depp only. So he is one of my favorites. इसलिए मैं खुश हो गई जब इनके बारे में आपको पढ़ा रही हूँ. So he is one of my favorite character from the Hollywood movie and his name is Johnny Depp. तो इनकी एक सीरीज है, मूवी की सीरीज है द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी. ओके, सो ही इज अ कैप्टन of a ship. The name of the ship is Black Pearl. तो ब्लैक पर्ल नाम का एक जहाज है, ये इनका शिप है. ओके, सो ये एक स्टोरी मतलब वेरी द स्टोरी ऑफ बिफोर द पीरियड्स ऑफ जब ये अंग्रेजों के टाइम में कहते हैं उस टाइम की स्टोरी है. एंड व्हेन देयर वर द जो समुद्री डाकू वगैरह जो होते थे उस टाइम की स्टोरीज हैं. ओके, एंड दिस इज मतलब जादू एंड ऑल बहुत कुछ है इसमें, मिरेकल्स है, बट दिस इज ऑल इज फिक्शनल. दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज जस्ट अ फिक्शनल स्टोरी. ओके, एवरीथिंग इज जस्ट फिक्शनल इन दैट मूवी. Okay, so he has played a role of a tremendous role of a character whose name is Jack Sparrow. So he was playing the main character, and he was a comedian in that movie. He just faces various situations.
But the main thing about this character is that was played by Johnny Depp, that how he uses his mind to मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी problematic conditions में भी वो अपना कहते हैं ना कि confidence lose नहीं करता. He is always happy throughout you will find out that he is always happy. कैसी भी conditions हो, कितनी भी मुश्किल conditions हो, he just shows that I am very happy. तो चाहे वो मरने वाले भी हों, तो वो हमेशा खुश रहता है. He just keep on doing the comedy throughout the movie. He was just always a very happy and खुश रहते रहते वो हर प्रॉब्लम को फेस करता है. ओके, हर प्रॉब्लम से बाहर भी निकल जाता है. सो दिस मूवी वॉज so this character, that Jack Sparrow, was played by Johnny Depp. Okay, so Johnny Depp, that is the sixth one. Johnny, Johnny, Depp, and that was played by, the character played by him was Jack Sparrow. That is the C one, that is Jack, Jack Sparrow, Sparrow, that is Jack Sparrow. This is the name of the character that was played by Johnny Depp in the movie, in the series of the movie, The Pirates of the Caribbean Sea. Okay, so you can just pause it here and write it down. Now, let's move to the last two were left. Now, the next is the seventh one. He's also one of our famous Bollywood actor. Seventh picture is of one of our famous Bollywood actor. His name is Salman Khan. He is none other than Salman Khan. So he has done a series of movie Dabangg. तो उन्होंने दबंग मूवी की एक सीरीज की, दबंग 1, 2, 3 I think. So he has done a series of movie Dabangg in which he played a role of a police inspector who is very jolly, and he is also very funny. Okay, he just faces various problems, and while facing the problem he always keep himself very cool. Okay, and somehow he manages to come out of those circumstances. Okay, so the classic character played by Salman Khan in the series of the movie Dabangg that is Chulbul Pandey. So Chulbul Pandey is the name of the character who is a police inspector. Okay, he wants to fight against the evil people in the movie. In all these three movies he wants to fight against the evil people. Okay, so name of the movie is Dabangg, and the classic character played by Salman Khan is Chulbul Pandey. That is Salman Khan, and the character played by him is, that is the A1, that is Chulbul Pandey. That is Chulbul Pandey. Moving to the last one, that is, okay, so the last picture is of one of the Hollywood actor. His name is Harrison Ford. Okay, so his name is Harrison Ford, and he has played the role of Indiana Jones in the movie Raiders of the Lost Ark. तो ये मूवी के बारे में बेटा मुझे ज़्यादा knowledge नहीं है. So it is also one of the famous Hollywood movie. Okay, and he has played a classic character of Indiana Jones in the movie The Raiders of the Lost Ark. So Harrison Ford has played the classic character of Indiana Jones. Given at option number G, I-N-D-I-A-N-A, Indiana, J-O-H-N-E-S, Indiana Jones in the movie Raiders of the Ark. Okay, so this is with the A part of the topic. Now let's move to the B part. Okay, you can just pause it here and write it down. Now,
let's move to the B part of the page. So in the B part, what is given? Guess the film from its main characters. So in the B part, the name of the characters of various movies is given, and while keeping in your mind the name of the characters, you have to mention the name of the movie. तो कैरेक्टर्स के नेम, अलग अलग कैरेक्टर्स के नेम दिए गए हैं और आपको बताना है, कैरेक्टर्स के नेम को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि उस मूवी का क्या नाम है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, योदा, Darth Vader, Luke Skywalker. So these are the three characters from the movie. And what is the name of the movie? So the name of the movie is Star Wars. So it is also Star Wars. क्या है? ये मूवी की सीरीज है. Star Wars is the series of the movie. इसमें 2-3 सीरीज आई थिंक, सॉरी 2-3 मूवीज हैं, 3-4 exactly I don't know because I have not watched it. So इसमें ये अलग अलग कैरेक्टर्स हैं. The name of the character is Yoda, Darth Vader and Luke Skywalker. So these are the three main characters from the movie Star Wars. Okay, and this is also a series of movie. Movie की series है, अलग अलग काफी सारे parts हैं इसके. Okay, so the first answer of the first one is Star Wars. Star Wars. Okay, just a second. I just write it a little bit clearly. That is Star Wars. Okay. Now moving to the second one. अकेला, रक्षा, बलू, शेर खान. Yes, ये तो आई थिंक सबको पता होगा. No need to guess. Okay, so the name of the movie is The Jungle Book. The name of the movie is The Jungle Book. तो The Jungle Book नाम की जो स्टोरी है, जो कि इट इज अबाउट अ बॉय हुज नेम इज मोगली. ओके, जो कि जंगल में एनिमल्स के बीच में पलता है. वॉल्फ फैमिली है, जो एक भेड़िए की फैमिली है, वो उसको पालती है एज देयर ओन चाइल्ड. ओके, एंड ही बिकेम द फ्रेंड विद द वेरियस एनिमल्स एंड हिज बेस्ट फ्रेंड्स वर बलू एंड बगीरा, जो उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे. द शेर खान इज द विलन ऑफ द मूवी. ही इज ऑल्सो ऑलवेज इन हरी टू किल द मोगली. Okay, but at last Mowgli somehow manages to kill the Sher Khan himself. Okay, so the name of this character is Akela, Raksha, Balu and Sher Khan. So it is a movie, The Jungle Book. The movie name is The Jungle Book. Third one, Tony Stark, Steve Rogers, Thor, Bruce Banner, Natasha Romanoff. So these are the characters. So what is the name of the movie? The name of the movie is The Avengers. तो Avengers जो movie है उसमें हमारे बहुत सारे जो सुपर हीरोज हैं. So they all are included in the movie The Avengers. So इसमें Spider-Man, जिसको आप Spider-Man, Iron Man, Captain America, Wonder Woman या सुपरमैन तो पता नहीं है कि नहीं, द डार्क नाइट, मतलब सॉरी द बैटमैन. सो मोस्ट ऑफ द सुपर हीरोज आर इंक्लूडेड इन दिस मूवी एंड दिस इज अ सुपर हीरो मूवी जिसमें कि बहुत सारे सुपर हीरोज हैं. एंड थॉर एंड हल्क, ऑल दीज आर इन दिस मूवी. सो द नेम ऑफ द मूवी इज द अवेंजर्स. द नेम ऑफ द मूवी इज द अवेंजर्स. Moving to the fourth one, Master Shifu, Pooh, Tigress, Monkey and Viper. So this movie is about, this is the name of the character of a movie. So what is the name of the movie? The name of the movie is Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, जिसमें कि एक पांडा होता है and he is very lazy. एंड उसको एक भविष्यवाणी के तहत उसको एक ड्रैगन ट्राइब होते वहां का सरदार बना दिया जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे जो एनिमीज है उनसे लड़ना पड़ता है. ओके, सो ही जस्ट ज्वाइंस द आर्मी ऑफ फ्यूरियस 5 एंड किल्स ऑल दोस एविल पर्सन्स. सो द नेम ऑफ द मूवी इज कुंग फू पांडा. Moving to the last one,
That is Dory, Marlin, Hank and Nemo. Dory, Marlin, Hank and Nemo. So this is the name of the various characters. So what is the name of the movie? The name of the movie is Finding Dory or Finding Nemo. ठीक है? Finding, ये दो movies I think. Finding Dory and Finding Nemo. Okay, so this is the name of the story. So these are the answers from the B part of page number 67. Okay, you can just pause it here and write it down. So with this, I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a good day.